Hello and welcome to We Learn. This is session 3, Organization Dynamics, Organization Stress. Topic to be covered: stress in the workplace, individual differences in the coping, stress and type of occupations, work families conflict, causes of stress in the workplace, procrastination, effect of the stress in the workplace, workaholic, treating the stress in the workplace, individual techniques for the work reductions. Stress in the workplace. Yes, as we were understanding in the organization dynamics that it is required to understand what is organization, how organization performs. So there always having a certain kind of stress in the organization. So how workplaces actually comes into a stress position. 46% of the workers find job to be extremely successful. Cost of a stress-related disorders is estimated to be $150 billion in a year. So stress-related disorders compares the 14% of the workers' compensation case. So in that terms, yes, this is the kind of the stress happened in the work, and this is the one of the obvious issues arises in the organization. Organization के अंदर arise होने वाले जितने भी issues हैं, उसमें सबसे common होता है stress. Now, what is exactly the stresses? Stresses psychologically and physiologically responses to the event and the environment. It could be like जब आप psychologically और mentally दोनों ही तरीके से जब अपने organization के अंदर respond करते हो, आप अपनी positions या अपने किसी भी तरीके के actions को describe करते हो, that comes into the stress part, that leads to the stress part. Interest good stress and distresses the bad stress. Psychological effects are any kind of an alarm when you were not taking the proper body rest आप body के साथ actually you were forcing him on a fighting with them just to be on time and giving them an alarm to wake, giving them an alarm to eat. Then resistance maintaining, that is maintaining the stage of evaluate the preparations. Exhaustion any kind of, like if the demand is if we can say that work is demanding more, so this is what the exhaustion would be have. So when demand exceed the body's capabilities. Stress having one of the where does the stress comes from? अगर देखा जाए तो stress आते कहाँ से हैं? तो major life event or the daily hazards will be the frequent, intensive or durations would be the stress. Job satisfaction and stress would be goes together. Those who enjoy the work surface less impact from the successful event. So this is the self background कि अगर probably organization में job satisfaction नहीं होती है, तो it would lead to the certain kind of stress. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन दी कोपिंग, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकता है, मैनेज कर सकता है. फर्स्ट इज दी सोशल सपोर्ट. दिस इज व्हाट द जॉब स्किल इज मोर स्किल्ड टू एट द जॉब द लेस स्ट्रेस वुड बी रिक्वायर्ड. एक ज्यादा एक हम ये बोल सकते हैं कि एक सोशल सपोर्ट तो एक फैक्टर है ही कि आपके कलीग्स के साथ अच्छा इन्वायरमेंट है, या society wise, or you can say that by the neighbor side you were the good person, good interactions with people, having a good word with people. But apart from that, job skills would be required. That means जिस तरीके की skills आपके की job की requirement है वो आपके पास है. If your job is demanding your more skills rather than your capabilities, so definitely आपको stress हो जाएगा. But अगर आपके पास वो skills हैं and your job is demanding the same, so there is no availabilities of stress. Then another is the physical health. Physical health is one of the good health lead to reduce the impact of stress. कि आप एक physically healthy person हो तो automatically stress जो है वो नहीं होगा. A type or B type personality would be there. A type personality would be very competitiveness, or in fact the sense of the time urgency would be there, and hostility would be there. So in that case, आप अगर A type personalities में हो, so obviously you are not lead to the any kind of stress, but you are into the B type personality. So that's very obvious it's probably a chance to generate the stress. So coping that you need these kind of factors कि आप social interactions ज़्यादा करो और अपनी capabilities को increase करने की कोशिश करें, physical health को अच्छा रखना, and being a type A personality. Type A personality is basically, as we were studying, they were hostile component of a type A personality is linked with the heart disease. Type A individual is in the essence create a more stress from themselves, whereas the type B individual rarely have a heart attack before the age of 70s. More individual differences is one of the job complexities. It increase the complexity lead to the heart disease.
in the type A individual, and but the complexity is also is linked to the job satisfaction. Locus of control would be definitely different. Internal locus of control is linked to reduce the impact of the stress, whereas the negative affectivity is linked to the nutricisms from the big five. The tendencies of to the focuses on the negative aspects of the life. It is linked to the higher level of the stress. Then individual differences, this is what reflecting a resistance to the stress. किस तरीके से हम लोग एक resistance ले सकते हैं stress से. This is the element include sense of commitment to the family and work would be one. A prescribed sense of control would be a view of a change as in a normal and challenging would always be there. Even more individuals differences would be there. So the organization based on the self-esteem over the estimations of the over-educacy and worth with regard to the our places in the employees organization. Job specification, self-esteem would always be there. Gender difference is one of the individual differences comes. एक organization self-esteem factors हमेशा रहता है, पर gender differences भी create होने के chances रहते हैं stress में. So female manager face more stressors than the male managers, the kind of role conflict, discriminations, harshness. So this kind of a thing would be there. So that comes into the one of the individual differences जो कि आपको stress lead कर सकते हैं. Stress and the type of occupation. Like clerical and the blue collar workers suffer the most stress due to the relative lack of control होने की वजह से yes उनके पास stress factor जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. Most stressful profession includes the laborer, secretary, clinical lab technicians, nurses, first line supervisors, restaurant servers, machines operators, farmer workers, miners. These are the persons who were actually having a stressful profession. One of the least stressful profession in the college professors, we can say that. So yes, this is the kind of type of professions जो कि आपको एक stress के बारे में एक idea दे रहे हैं कि जिस तरीके की इनकी वर्क जॉब होती है, जो भी इनका वर्क स्टाइल होता है, उस तरीके का स्ट्रेस होता है. जितने भी क्लरिकल हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स हो गए, दे एक्चुअली हैव अ वेरी मच हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी प्रीशियस होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं कि दे हैव टू फुलफिल दैट, और वो एक अल्टीमेट फैक्टर होता है उनके लिए. सो दैट इज इस तरीके की जॉब टाइप्स होती हैं तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है. एंड रादर देन द प्रोफेशनल, we can say that as we take the example of the professor side, because the professor's work is to put their best as in a learning the knowledge part. उनकी knowledge part में concept जो होता है वो अपना best देना होता है. So professors do that, but yes, at the end of day, the result is all on the students because they have to take it, they have to learn it. So वो पूरी responsibilities उन पे आ जाती है. So yes, that is why this profession is called the less stressful profession. Work family conflict, yes, greater role conflicts for the women, that family responsibility of a family life fall on to the women. Family with the 3 kids average work week for a female is 90 hours, for a male is 70 hours. So in that case, yes, family responsibilities जो है वो एक ladies में conflict rise कर सकती हैं, greater conflict, और stress भी क्योंकि double responsibilities होती हैं. Bad work day trends to carry over into the family life, a tendency stronger for the women. Sad positive state do not carry over. So अगर किसी भी तरीके की bad performances हुई so वो automatically reflect हो जाता है. Another is work report, that job interferes with the family life more than vice versa. So that is the work reports, job interference would be always there. Companies can help to reduce the stress with the flexible schedules and supportive supervisors, so more helpful than the childcare facilities. Despite these problems, women with pay the job are the psychologically and physically healthier than the full-time homemaker. Cause of the stress in the workplace. Workplace में stress होने के क्या-क्या causes हैं? सबसे पहला है the workload. अगर workload बहुत ज़्यादा है, that is quantitative, too much to do, too short time, छोटे से time में बहुत ज़्यादा काम करना है, so automatically stress होगा. या बहुत ही ज़्यादा difficult काम है और quality base पर करना है, again stress हो जाएगा. Quantitative has increased in the recent year due to the downsizing. Work unloads work that is too simple or the insufficient to fill one's time. So this comes into the work underload. अगर बिल्कुल ही काम नहीं है, बिल्कुल underload है, तो उस केस में भी simply idle बैठना भी जो होता है एक workload increase करता है.
Yes, at the same time, both of this impact stress and the health appeared to the moderate amount of stress is optimal. Another is ऑर्गेनाइजेशन चेंज. अगर किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है और एम्प्लॉय उस चेंज के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रेस राइज कर देगा. इट इज नॉट हार्डी. द चेंज कॉज द स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल एंड कैन बी रिड्यूस बी including the employees in the planning. Role ambiguity is one of the unstructured or poorly defined job responsibilities and which is actually performed, and role conflict is confliction between the job demands and employees' personal standards. Then procrastination, it is basically the delay actions for no good reasons. It is just a suggestions for controlling it, like calculating the cost of procrastination. That is किसी भी तरीके की डिलेइंग पार्ट जो होता है वो भी एक स्ट्रेस को लीड कर पाता है. कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, और वी कैन से दैट कॉस्ट राइज हो जाती है, परफॉर्मेंस नहीं आती है, ब्रेक हो जाते हैं टास्क और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं जनरेट हो पाती. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कम्स इनटू. रिमूव द माइंड क्लस्टर्स. एक माइंड में कहीं ना कहीं एक इश्यूज रह जाते हैं, थिंकिंग रह जाती हैं. Fill the schedule very much, provide these stimulations and make you busy or revising by the working up deadlines. Effect of stress in the workplace. अगर employees को किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है तो उसका सिंपल इफेक्ट है क्या? सबसे पहले तो मास साइकोजेनिक इलनेस. इट इज व्हाट नोन एज द सैमिंग ऑफ the hysteria or the isolation and the suggestibility in terms of कि psychologically वो fit नहीं रहते. ब्रेन आउट रिजल्ट फ्रॉम दी ओवरवर्क. इट इज काइंड ऑफ इमोशनल एग्जॉशन हो सकती हैं. डीपर्सनलाइजेशन वुड बी वन सोल्यूशन. जब अपने ऊपर कैपेबिलिटी नहीं रह जाती, डाउट होने लग जाता है. रिड्यूस द सेंस ऑफ द पर्सनल अकम्प्लिशमेंट एंड yes at the same time the quantity of a work may stay the same but the quality declines. Depressions, apathy, irritability, boredoms may occur. So these are the effects. Then what is work alcoholic? Work alcoholic is one of the again a sign of enough stress. इसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है और ये एक साइन है स्ट्रेस का. इट इज नॉट द एडिक्शन टू दी वर्क. जब एक किसी भी तरीके की एडिक्शन जो है वर्क से रिलेटेड हो जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग. कि जब एक गुड्स को लेकर इनसिक्योरिटी हो जाती है, या लगता है कि अगर ये काम नहीं किया तो जॉब चली जाएगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, अर्निंग कहाँ से होगी, मनी कहाँ से आएगा. तो उसको रिलेटेड वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत सारा काम और बहुत सारा वर्क प्रेशर लेना, दैट इज वर्क एल्कोहलिकनेस. तो हेल्थ वर्क एंथुसियास्टिक usually have a job with the autonomy and varieties, appropriate skills for the job and supportive families. So in that case, उस work alcoholic condition में it is required कि एक healthy environment, एक person भी healthy enough होना चाहिए. Work जो है enthusiastic होना चाहिए कि वो person enthusiastically उस काम को perform करे. Yes, at the same time appropriate skills चाहिए, उसके लिए skills match up करती रहनी चाहिए, support होना चाहिए families का. अगर unhealthy है तो unhealthy case में work alcoholic would be compulsive और वो compulsive situations में आ जाते हैं. It's designed to perform the job task, often negatively impacted by the co-workers. So that's all comes into it. Treating the stress in the workplace, how it is required to treat the stress in the workplace. Workplace में stress को कैसे लिया जाए? Organizational techniques are basically first is provide the sufficient support for the change. एक proper change provide करना. Provide the sense for the control through the practices and the participation. And yes, at the same time clearly define the employee's role. रोल क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉइज को कि उन्होंने क्या परफॉर्म करना है, उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है. एलिमिनेट दी वर्क ओवर एंड अंडरलोड. किसी भी तरीके से वर्क ओवरलोड या अंडरलोड नहीं होना चाहिए. EAP फ्रॉम द स्ट्रेस रिडक्शन, दैट मीन्स EAP टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए फॉर दी स्ट्रेस रिडक्शंस. एंड प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी फॉर दी सोशल सपोर्ट, यानी कि जब आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो सोशल सपोर्ट्स के लिए. सो दिस ऑल कम्स इनटू दी ट्रीटिंग दी स्ट्रेस इन दी वर्कप्लेस. नाउ इंडिविजुअल टेक्निक्स. एक इंडिविजुअल किस तरीके की टेक्निक यूज कर सकता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द टेक्निक कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करे. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एक रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पार्ट जरूर करे जो कि उसके माइंड को रिलैक्स करती हो, जो उसे पीस प्रोवाइड करवाती हो. देन बायोफीडबैक, इट्स वन ऑफ द हैविंग द कनेक्शन विद द नेचर्स और नेचर के साथ इंटरैक्ट करना, गुड सीन्स, इवन एक फ्रेशर्स का को लेना है और उस पर एक अच्छा एक्सपीरियंस करना. देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज ट्राई टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर.
try to get a certain changes. अगर restricted जितना एक employee रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका person जो है cope up नहीं कर पाएगा changes के साथ. So now yes, there are few questions which you have to do it yourself. So what are the various causes of a stress in the workplace? Workplace के अंदर क्या क्या causes होते हैं आपको ये बताना है. What are the various strategies to treat the stress in the workplace? एक तो क्या strategies, क्या technique है workplace को solve करने के लिए, कैसे हम उस पर solve up कर सकते हैं, तो आपको वो strategies बतानी है. So yes, the techniques are most important part. अगर stress is always there in life, तो अगर आप उन techniques को follow करते हो तो वो stress कभी भी आपको approach नहीं करेगा. So this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.